गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियन प्रिजन कंडीशंस में डिटेल ग्लोबल एक्सट्रेडिशंस। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है मदन बी लोकुर, उन्होंने वार्न किया है कि एक्सट्रेडिशंस डिफ़िकल्ट हो जाएंगी जब तक इंडियन प्रेजेंस की कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती है। तो इंडिया का जो एम्बिशन है अपने अपने इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स को वापस लेकर आना इंडिया में, वो डिटीरियोरेटिंग कंडीशंस ऑफ इंडियन प्रिजन्स की वजह से ग्रोइंग स्क्रूटनी फेस कर रहा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो रिलीज़ की गई है, इसमें ही जो है ग्रेव कंसर्न एक्सप्रेस किया गया है कि जो पुअर प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उससे इंडिया की जो ग्लोबल लीगल रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही है। तो एक रीसेंट यूके कोर्ट का डिसीजन भी हाईलाइट किया गया जिसमें कि एक्सट्रेडिशन जो है वो डिनाई किया गया है इंडिया को। कहा है कि एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स होने चाहिए कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क में। जस्टिस लोकुर ने यूके के एपेलेट कोर्ट के डिनाइल ऑफ एक्सट्रेडिशन को हाईलाइट करते हुए कहा, संजय भंडारी के, जो कि एक आर्म्स डीलर था, आर्म्स डीलर है एक्चुअली, कि और वो टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वांटेड है इंडिया में। लाइक और रिजेक्शन जो है वो इसलिए की गई यूके कोर्ट द्वारा कि इंडिया जो है वो ह्यूमन कंडीशंस जेल में अपनी नहीं दे पाता है, खासकर तिहाड़ जेल में दिल्ली में। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि लैक ऑफ कॉन्क्रीट अश्योरेंसेज है इंडियन गवर्नमेंट से डिस्पाइट मल्टीपल रिक्वेस्ट। ये रूलिंग जो है वो लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज रखेगी लगभग 100 पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो इंडियन अथॉरिटीज़ वर्ल्ड वाइड भेज रही हैं। यूके गवर्नमेंट ने यूके जजमेंट जो है वो सेवरल इंसिडेंट्स को साइट करते हुए क्वेश्चन कर रही है सेफ्टी और ओवरसाइट ऑफ इंडियन प्रेजेंस। क्रिश्चियन मिशेल, जो कि अगस्टा वेस्टलैंड के केस में अक्यूज़ हैं, उनकी बेल को भी डिक्लाइन किया गया। इम्प्रिजनमेंट, इससे हमारी जो ये कैसे वो हार्श प्रिजन एनवायरनमेंट को परसीव किया जाता है, ये हाईलाइट होता है। ऐसे ही तिल्लू ताजपुरिया, एक इनमेट ऑफ एट तिहाड़, उसको पब्लिकली मार दिया गया इन फुल व्यू ऑफ सीसीटीवी। जगतार जोहल और अंकित गुज्जर, दोनों को जो है कस्टोडियल डेथ हुई। तो ये जो है इंडिया के ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट्स को जो है वो चैलेंज कर रहा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में की फाइंडिंग्स ये है कि डेटा ड्रिवन इनसाइट्स दिए गए हैं रिपोर्ट द्वारा। जो भी सिस्टमिक इश्यूज़ है जो इंडिया की जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन्स और लीगल एड सेक्टर्स को हार्म कर रही है। तो अगर हम देखें, सिर्फ 1 सिविल पुलिस ऑफिसर है फॉर एवरी 831 सिटीजन। 17% पुलिस स्टेशन में तो सीसीटीवी सर्वेलेंस भी नहीं है। 30% ऑफ पुलिस स्टेशन में विमेन हेल्प डेस्क नहीं है। रिजर्व कोटास जो विमेन इन पुलिस में होते हैं वो अनमेट है सभी स्टेट्स और यूटीज़ में। प्रिजन्स का अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्रिजन्स, ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं। दिल्ली की जेल्स में 91% अंडर ट्रायल्स हैं। गुजरात जो है वो हाईएस्ट वैकेंसीज रिपोर्ट कर रहा है हाई कोर्ट जजेस और स्टाफ की। बिहार का जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ पर 71% ऑफ केसेस पेंडिंग है फॉर ओवर 3 ईयर्स। पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है वो बहुत ही कम है जुडिशरी पर। कोई भी स्टेट जो है वो 1% अपने टोटल बजट से ज़्यादा जुडिशरी को एलोकेट नहीं करती है। तो चैलेंजेस यही है कि जो लीगल ग्राउंड्स की बजाय ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स पर जो है वो चैलेंज किया जा रहा है एक्स्ट्रेडिशन को। यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कोर्ट्स में, जो कि स्ट्रिक्टली एटलीस्ट प्रोक्लेम करते हैं वो कि वो स्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, वो इंडियन रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट्स ना हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, मॉनिटरिंग सिस्टम्स में, प्रिजन स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो जब तक प्रिजन्स हमारी रिफॉर्म नहीं होती, ह्यूमन कंडीशंस गारंटी नहीं होती, इंडिया के एक्सट्रेडिशन गोल्स जो है और जो इंडिया की स्टैंडिंग है इंटरनेशनल लॉ फोरम्स में, वो कंटिन्यू होती रहेगी सफ़र करना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का अपटेक स्लो हो रहा है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने रिसेंटली कंसर्न्स रेज किए हैं रिगार्डिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को उनके हायर एजुकेशन में। स्कीम टारगेट करती है उन स्टूडेंट्स को जिनको एडमिशन मिल चुका है इंडिया के टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। स्टूडेंट्स जिनके पास कोई भी और तरह की सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उनको ये कोर्स पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है इन बिटवीन या डिसमिस किए जा चुके हैं इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिनरी या अकेडमिक ग्राउंड्स पर, वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं। कोई अपर लिमिट नहीं होती है अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन की। डिपेंड करता है कि कोर्स फीस कितनी है या फिर बाकी की फ़ीस कितनी चार्ज की जा रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा। स्टूडेंट जिसकी फैमिली इनकम अप टू 8 लाख रुपीज़ है,
उसको 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है एजुकेशन लोन्स ऑफ अप टू 10 लाख पर। अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो इंटरेस्ट सबवेंशन मैक्सिमम 10 लाख तक पर ही मिलेगा। एजुकेशन लोन सैंक्शन अमाउंट अगर अप टू 7.5 लाख तक की है तो स्टूडेंट को के बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिफ़ॉल्ट की क्रेडिट गारंटी भी देती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CPU, GPU एंड TPU। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों में फ़र्क क्या है ये देखते हैं। CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक जनरल पर्पस प्रोसेसर जो 1950s में डेवलप हुआ था। इसको आप कंडक्टर मान सकते हो एक ऑर्केस्ट्रा का, कि बाकी के सारे कंप्यूटर फंक्शंस या पार्ट्स का, जैसे GPUs, डिस्क ड्राइव्स या मेमोरी यूनिट्स का को जो है ऑपरेट करने में कोऑर्डिनेशन करता है। GPU एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है जो कई तरह के टास्क साइमल्टेनियसली कर पाता है और पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाता है। मॉडर्न GPUs में थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होते हैं। तो इनिशियली तो ये गेमिंग और एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ किया जाता है। अब अगला है TPU, जिसको हम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये एक तरह से टाइप ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब ये एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया जाता है, जैसे AI टास्क के लिए। तो गूगल ने 2015 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इसको। तो ये स्पेशली डिज़ाइंड हार्डवेयर यूनिट्स हैं जो मशीन लर्निंग ऑपरेशंस के लिए बनाए जाते हैं हैंडल करने के लिए। न्यूरल नेटवर्क्स को काफ़ी एफिशिएंटली ये हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टूटी आइलैंड्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब से सिविल वॉर हुई है सूडानीज़ आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में, टूटी आइलैंड जो है वो डिवास्टेट हो चुका है वायलेंस और ऑक्यूपेशन से। टूटी आइलैंड जो है वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू एंड वाइट नाइल रिवर्स पर लोकेटेड है खार्तूम सूडान में, वन ऑफ द सिटीज़ ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स। लगभग 8 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ आइलैंड है ये, और फार्मिंग और फिशिंग पर डिपेंडेंट है। खार्तूम्स गार्डन भी कहते हैं इसे। तो ये इधर डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस है महास कम्युनिटी के लिए। वॉर ने यहाँ पर लगभग 13 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस कर दिया है। क्लाइमेट चेंज से भी जो है इस आइलैंड की वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। तो मतलब डुअल थ्रेट है, कन्फ्लिक्ट का भी और क्लाइमेट चेंज का भी। इसीलिए जो है हार्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर इनिशिएट किया गया, यहाँ को प्रिजर्व करने के लिए और कम्युनिटी नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हम्पी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक मंडप था विरूपक्ष टेम्पल का जो कोलैप्स हो गया ड्यू टू हैवी रेन। तो मतलब कंसर्न्स दिख रहे हैं कि निगलेक्ट किया जा रहा है इस एरिया को। तो हम्पी जो है वो कैपिटल सिटी थी विजयनगर एम्पायर की, और इसको ट्रेडिशनली लोकली हम पंपक क्षेत्र ऑफ किशिखिंधा भी कहते थे। हम्पी जो है वो सेंट्रल कर्नाटका में ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर लोकेटेड है। एम्पायर फॉल हुआ 1565 में आफ्टर बैटल ऑफ टालीकोटा, और जब डेक्कन सल्तनत ने डिफीट किया रामराया को और उसके बाद मास डिस्ट्रक्शन की। सिटी लगभग 6 महीने तक जलती रही। हम्पी जो है वो फॉरगॉटन रहा अंटिल लेट 18th सेंचुरी। और फर्स्ट मेजर कंजर्वेशन इनिशिएटिव हम्पी नेशनल प्रोजेक्ट 1976 में लॉन्च किया गया। प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स यहाँ पर है विरूपाक्षा टेम्पल, लोटस महल, क्वींस बाथ, एलिफेंट स्टेबल्स। हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला 1986 में, और ये वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल जोन्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली 269.97 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए दिबांग वैली में। 3097 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है ये जो कि कंट्री में प्रपोज है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रन ऑफ द रिवर स्कीम्स पर बेस्ड है। ड्री एंड टैंगोन रिवर्स दोनों जो है दिबांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है। रिचेस्ट बायोजोग्राफिकल प्रोविंस है ये हिमालयन जोन का। प्रोजेक्ट एरिया जो है वो डोमिनेटेड है बाय इंडिजिनस पॉपुलेशंस जो कि इदू मिशमी टाइप्स को बिलोंग करती है। तो जिंदल पावर लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट मिलकर इसको प्रोजेक्ट को बना रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CJD। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो लोगों की डेथ हो गई है रिसेंटली एक रेयर और इनक्यूरेबल ब्रेन डिजीज़ जिसको हम क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़ या फिर CJD कहते हैं। तो एक रेयर ब्रेन डिसऑर्डर है जिससे डिमेंशिया होता है। ये प्रायन डिसऑर्डर्स को बिलोंग करता है। अल्जाइमर्स जैसे इसके सिम्टम होते हैं, बट सिम्टम धीरे धीरे वर्स होते रहते हैं बहुत तेज़ी से, और मौत भी हो जाती है ऑफकोर्स। सिर्फ 1 to 2 केसेस जो हैं वो CJD के वो डायग्नोज हो पाते हैं पर 1 मिलियन पीपल। और ये डिसीज़ मोस्ट ऑफ्टन ओल्डर एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। तो होता क्या है कि अब नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स जो कहते हैं जिनको हम प्रायंस कहते हैं वो बनने लगते हैं इसमें।
प्रायन प्रोटीन्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, बट मोस्टली नर्वस सिस्टम में होते हैं। जो अबनॉर्मल प्रायंस फॉर्म होने लगते हैं तो वो अपने जो है इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट ट्रांसमिट करने लगते हैं और डैमेज करने लगते हैं नियर बाय हेल्दी प्रायंस प्रोटीन्स को, जिससे हेल्दी प्रायंस जो है वो एबनॉर्मल प्रायंस में कन्वर्ट होने लगते हैं। फिर जब ये क्लम्प टुगेदर होते हैं तो ये ब्रेन में टिश्यू में बनने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और मेन सिम्टम्स इसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिलता है। फिर डिमेंशिया होता है, इनवॉलंटरी मसल जर्क्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। मोस्ट पीपल जो जिनको सीजेडी होता है वो 1 साल के अंदर मर जाते हैं, और करंटली इसका कोई भी क्योर नहीं है, बस सिर्फ इसलिए सिम्टम्स को ही रिलीव करने में फोकस रहता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Indian prison conditions may derail global extraditions. This topic is important for your governance section. So former Supreme Court Justice Madan B. Lokur has warned that extraditions will be difficult until conditions are improved in Indian prisons. So it's India's ambition to bring back economic fugitives is facing growing scrutiny due to the deteriorating conditions of Indian prisons. At the release of India Justice Report 2025, former Supreme Court judge and current chair of the UN Internal Justice Council, Justice Madan B. Lokur has expressed grave concerns over the impact of poor prison infrastructure on India's global legal reputation. So he has highlighted a recent UK court decision which denied extradition to India, and he has underscored the urgent need for systemic reforms in the country's criminal justice framework. So he referenced the UK appellate court's denial to extradite Sanjay Bhandari, who is an arms dealer, who is also wanted in India for tax evasion and money laundering. Rejection was based on India's inability to assure human conditions in its jails. So the court has also highlighted a lack of concrete assurances from the Indian government despite multiple requests. This ruling will have lasting consequences on over 100 pending extradition requests from the Indian authorities worldwide. UK judgment has cited several other incidents which question the safety and oversight of Indian prisons. First is of course the Christian Michel case, who is accused in Augusta Westland scam, and bail was declined, preferring imprisonment over restrictive bail conditions, shedding light on how even accused individuals perceive the harsh prison environment. So Tilu Tajpuria, who was an inmate at Tihar, was publicly beaten to death in full view of CCTV and passive prison guards. Jagtar Johal and Ankit Gujjar also met tragic ends in custody, adding to the list of custodial deaths which challenge India's human rights commitments. So, released alongside Justice Lokur's remark, the India Justice Report has also offered data-driven insights into the systemic issues plaguing India's judiciary, police, prisons, and legal aid sectors. For example, in case of police force, there is just one civil police officer for every 831 citizens. 17% of police stations lack CCTV surveillance. 30% of police stations do not have a women's help desk. Reserved quotas for women in police are unmet in all states and UTs. Uttar Pradesh houses the most overcrowded prisons. Delhi's jails comprise about 91% of under trials, highlighting delayed justice. Gujarat has reported highest vacancies in high court judges and staff. Bihar's lower courts have 71% of cases pending for over 3 years. Per capita spending on judiciary remains suboptimal. No state in India is allocating more than 1% of its total budget to the judiciary. So India's ability to bring back fugitives is increasingly being challenged not just on legal ground but on humanitarian concerns as well. European and North American courts adhering to strict human rights standards are also unlikely to entertain Indian requests unless substantial improvements are made in infrastructure, monitoring systems, and accountability of prison staff. Justice Lokur has also noted that unless prisons are reformed and human conditions are guaranteed, India's extradition goals and its standing in international law forums will continue to suffer. Okay. So the next topic is PM Vidya Lakshmi scheme. This topic is important for your governance section. So amid a slow uptake of PM Vidya Lakshmi scheme, PSBs or public sector banks have recently raised several concerns regarding its implementation. PM Vidya Lakshmi is a central sector scheme to provide financial support to meritorious students in their pursuit of higher education. The scheme targets students who have secured admission to any of India's top 860 quality higher educational institutions, both private and government, as ranked by the NIRF. Students who receive any other central or state government scholarship
interest subvention plan or fee reimbursement are not eligible for benefits under the PM Vidya Lakshmi scheme. Students who stop their studies in between or are dismissed from the institution on disciplinary or academic grounds are not eligible for interest subvention or credit guarantee under the scheme. There is no upper limit on the amount of education loan you can get under the PM Vidya Lakshmi scheme. It will also depend on course fees and other fees charged by the higher education institution. A student whose annual family income is up to 8 lakh rupees will be eligible to get 3% interest subvention for education loans of up to 10 lakh rupees. If the education loan amount is more than 10 lakh, then interest subvention will be provided for the disbursed total principal amount of loan up to 10 lakh rupees. When the education loan sanction amount is up to 7.5 lakh, the student will be eligible for a credit guarantee where 75% of its outstanding default will be covered by the government. So the next topic is CPU, GPU and TPU. This topic is important for your science and tech section. So how TPU is different from CPU and GPU? CPU is a general purpose processor which was developed in 1950s and it can handle a wide variety of tasks. It functions like a conductor in an orchestra, coordinating the operations of all other computer parts like GPUs, disk drives and memory units. What is GPU, or the graphics processing unit? It is a specialized processor designed to perform many tasks simultaneously using a technique called parallel processing. Modern GPUs contain thousands of cores. Initially developed for rendering graphics in gaming and animation, GPUs are now widely used in machine learning and artificial intelligence. What is a TPU? TPU is also a type of application-specific integrated circuit, meaning it is built for a specific function, in this case AI tasks. First introduced by Google in 2015, TPUs are specially designed hardware units built from the ground up to handle machine learning operations. They are optimized to run neural networks efficiently, enabling faster training and execution of AI models than GPUs or CPUs. So the next topic is Tuti Island. This topic is important for your international relations. Since the outbreak of civil war between Sudanese army and the Rapid Support Forces, Tuti Island has been devastated by violence and occupation. This island is located at the confluence of Blue and White Nile rivers in Khartoum, that is in Sudan, and it is one of the city's oldest settlements, known for its lush greenery and agriculture. This island spans 8 square kilometers and it was traditionally dependent on farming and fishing, earning the nickname Khartoum's Garden. It holds deep cultural significance for the Mahas community who settled here in 15th century. And as per UN estimates, the war has displaced 13 million people, killing tens of thousands, and pushed 1 lakh into famine in Khartoum alone. Climate change has worsened the island's vulnerability by disrupting the Nile's natural flooding cycle. So the dual threats of conflict and climate change, due to the threats of conflict and climate change, the HEART project was initiated to preserve the entire system and document community knowledge here. The next topic is Hampi. This topic is important for your art and culture section. Recently, a mandap at Virupaksha temple collapsed due to heavy rains, sparking concerns over neglect. Hampi was the capital city of Vijayanagar Empire, established in 1336 by Harihara I and Bukka Raya I of Sangama dynasty. Traditionally, it was known as Pampak Kshetra of Kishkindha, and it is located in the central Karnataka on the banks of Tungabhadra river. The empire fell in 1565 after the Battle of Talikota, where the Dekkal Sultanates defeated Ramaraya, leading to mass destruction. The city reportedly burned for 6 months. Hampi remained forgotten until the late 18th century when British antiquarian Colin Mackenzie mapped it in 1799, creating the first cartographic records. But the first major conservation initiative was started in 1976 called the Hampi National Project. And the prominent landmarks here include Virupaksha Temple, Lotus Mahal, Queen's Bath and Elephant Stables. Hampi was declared a UNESCO World Heritage Site in 1986 and it is one of India's largest archaeological zones. The next topic is Italian hydroelectric project. This topic is important for your economy section. So Arunachal Pradesh government has recently allocated about 270 crore rupees for the construction of Italian hydroelectric project in Dibang Valley. So it's a 3097 megawatt hydroelectric project planned in Dibang Valley of Arunachal Pradesh. It is one of the largest hydroelectric projects proposed in the country in terms of installed capacity.
It is proposed to be developed as a combination of two run-of-the-river schemes, uh, Dri and Tangon rivers, which are tributaries of the Bang. So this project area falls under the richest biogeographical province of the Himalayan zone. This project area is dominated by indigenous populations belonging to Idu Mishmi tribes. So this project is being executed through a joint venture company of Jindal Power Limited and Arunachal Pradesh Limited, Arunachal Pradesh government. So the next topic is Creutzfeldt-Jakob disease. This topic is important for your social issues. Two people are believed to have died from a rare and incurable brain disease called Creutzfeldt-Jakob disease or CJD within just a few months of each other in the US. So it's a rare brain disorder which leads to dementia. So it belongs to a group of human and animal diseases known as prion disorders. Uh, so symptoms of this disease are similar to those of Alzheimer's, but CJD usually gets worse much faster and leads to death. About 1 to 2 cases of CJD are diagnosed per million people around the world each year. So the disease most often affects older adults. CJD and other prion diseases are caused by abnormal form of proteins called prions. Healthy and harmless prion proteins are found throughout the body, but mostly in the nervous system. When abnormal prions form, they can transmit their incorrect and damaging form to nearby healthy prion proteins and cause the healthy prions to change into abnormal prions. Once they're formed, prions can clump together and build up in brain tissue, which may lead to the nerve cell loss and other brain damage seen in CJD and other prion diseases. The main symptoms of CJD are cognitive decline, leading to dementia, involuntary muscle jerks, and lack of coordination of movements. Most people with CJD will die within a year of symptoms starting, usually from infection. There is currently no cure for CJD, so the treatment is focused on relieving symptoms only. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.